So good evening to all of you guys. Welcome to you all on the Get Study 5 Plus. So guys, in today's class, again we are continue the LTA system for sinusoidal input, and as well as we will start the frequency response analysis for a second order system. Okay. So you can just confirm audio and video. Am I audible? Audio video clear, beta? Yes, sir. Okay. Okay, guys. So tell me, I think this is all about, already we discussed till here. So I have given you one question, beta. Have you tried, all of you? क्या आपने कोशिश किया करने का? चलो, जो कौन से क्वेश्चन में थे हम? I think ये वाला वो क्वेश्चन था. सुनो. चलिए तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का. First of all, student, tell me how many omega 1, omega 2. Already I told you what is the magnitude and what is the angle equation. So first of all, we should write here the magnitude, sir. The magnitude Tj omega mod. So wherever is S, you need to put j omega first of all. ये हमारा लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था. First we have to complete this, and after that we will start resonant peak, resonant frequency concept. Okay. The magnitude is what here? 10 upon under root of real part square, imaginary part square. Omega square plus 1 under root of omega square plus 4. So this is nothing but your final magnitude equation. Okay, sir. So if we are writing here magnitude, then tell me guys, shall we write the magnitude is nothing but 10 upon, sir, under root of omega square plus 1 dot omega square plus 4 dot omega square plus 4, yes or no? And here we need to put omega 0. Don't you think once you will omega 0 0, so 10 upon root 4 क्या होता है? 2. So is it 5 only? तो क्या a नोट का वैल्यू 5 आया था क्या? Just confirm this बच्चों. Just confirm this. a नोट का वैल्यू 5 आएगा? Now tell me कि सर यही मैग्नीट्यूड में 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, दिस टाइम यू नीड टू पुट 1. अगर आप 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इज रूट 2, एंड हियर इज ऑल्सो 1 प्लस 4 इज इट 5. नाउ 10 अपॉन रूट 10 हो गया है, तो 5 टू 10 होता है रूट 10. 10 अपॉन रूट 10, तो न्यूमरेटर में रूट 10 आ गया सर. a1 का वैल्यू क्या हम रूट 10 लिख दें? a1 का वैल्यू रूट 10 आ गया, ये भी सर नॉन हो गया. अब बताइए कि सर हियर दिस टाइम द मैग्नीट्यूड इज 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 4. क्योंकि ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो हम भी थोड़ा कन्वेंशनली इसको सॉल्व कर रहे हैं. ओमेगा का वैल्यू 2 पुट करो, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इट रूट 5. यस सर. एंड हियर ऑल्सो 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 8, सो इज इट रूट 8. तो क्या यहां से वैल्यू 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 5 जा 40, क्या 10 अपॉन रूट 40 आया क्या? यस सर. तो बच्चों a2 का वैल्यू जो a2 का वैल्यू है, क्या वो 10 अपॉन रूट 40 आया? क्या a2 का वैल्यू 10 अपॉन रूट 40 आया क्या बच्चों? यस और नो? a2 का वैल्यू 10 अपॉन रूट 40 आ गया. a0 भी आ गया, a1 भी आ गया, a2 भी आ गया. ठीक बात है सर. नाउ टेल मी गाइस व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है बताओ जरा. तो एंगल का इक्वेशन लिख लेते हैं फटाफट से. व्हाट इज द एंगल इक्वेशन? सर 10 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2 ट्रांसफर फंक्शन है. ट्रांसफर फंक्शन इज 10 अपॉन s प्लस 1 एंड s प्लस 2. 10 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2 है. यस सर. बताओ इसका एंगल क्या होगा? सो यू शुड राइट द एंगल डायरेक्ट इक्वेशन. सर एंगल इक्वेशन इज नथिंग बट 10 का एंगल हो गया 0, और जहां कहीं भी s है वहां j ओमेगा रखो. तो अगर रख दोगे j ओमेगा, then you should write here. सर ये तो j ओमेगा प्लस 1 और j ओमेगा प्लस 2 आया. अब यहां से एंगल निकालो भैया. एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ 10? 0. j ओमेगा प्लस 1 का एंगल हो गया माइनस के साथ tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 1, और ये भी टर्म ऊपर लेके गए तो यहां आप वापस लिखोगे माइनस का tan इनवर्स ओमेगा बाई 2. इज दिस क्रिस्टल क्लियर प्यारे बच्चों? यस और नो? यस. अब यहां पे आपको ओमेगा का वैल्यू 1 पुट करना है तो 5 मिलेगा. यहां कैलकुलेशन में आपका कैलकुलेटर निकाल लो बच्चों.
कैलकुलेटर निकाल लो, बताओ जरा फटाफट से कि वंस यू विल पुट ओमेगा 1 व्हाट यू विल गेट 5 इक्वल टू व्हाट, माइनस का tan इनवर्स 1 अपॉन 1 एंड माइनस का tan इनवर्स इज इट 1/2. कैन यू प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज दिस वैल्यू. इसको हम 5/1 बोल रहे हैं एक्चुअली, तो ये 5/1 है क्या? ये सर 5/1 है. ये 5/1 का वैल्यू क्या आया, ये कैलकुलेट करके बताओ. नेगेटिव में आया है कुछ, बताओ क्या आया नेगेटिव. फिर हम 5/2 निकालेंगे. 5/2 शायद नेक्स्ट स्लाइड पे निकालेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है. पहले आप 5/1 निकाल लो इस स्लाइड पे फटाफट से. 5/1 बताओ मेरे को, व्हाट इज द 5/1 वैल्यू. टेल मी, इज इट माइनस का 71.56? So you are saying I am writing here this value. So I think so 5/1 value is, you are saying it is around माइनस का 71.56 एग्जैक्टली. शाबाश. सो माइनस का 71.56 आई हैव आल्सो कैलकुलेटेड. शाबाश. सो 5/1 वैल्यू बिल्कुल सेम है सर, मैच हो गया बिल्कुल परफेक्टली. नाउ वी शुड फाइंड 5/2 आल्सो. तो यही फाइंड कर लेते हैं. चलो यहां कर लेते हैं. 5/2 मतलब क्या हो जाएगा सर? 5/2 मींस वी नीड टू फाइंड ओमेगा एंगल एट ओमेगा इक्वल टू 2. इट मींस इन दिस इक्वेशन वी नीड टू पुट एंगल ओमेगा 2. तो यहां लिखेंगे सर माइनस के साथ tan इनवर्स 2 अपॉन 1 एंड अगेन माइनस का tan इनवर्स इज इट 2 अपॉन 2. जरा चेक करो यहां से वैल्यू क्या आएगा. माइनस का tan इनवर्स 2/1 माइनस का tan इनवर्स 2/2. जरा सॉल्व करो. व्हाट इज दिस एग्जैक्ट वैल्यू? व्हाट इज दिस एग्जैक्ट वैल्यू? तो 5/2 का वैल्यू क्या आया? वन 108 आ रहा है क्या? माइनस का 108.43. माइनस का 10. शाबाश. माइनस का 108.43 डिग्री. क्या आ गया सर? 5/2. नाउ स्टूडेंट, नाउ अगेन कमिंग टू द एक्चुअल आउटपुट. जो हमारा आउटपुट हमने लेट किया था, आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू. तो ये जो वैल्यू है ये पूरा एज इट इज वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. ठीक है, ओके सर. तो वाई टी का वैल्यू क्या था सर? वाई टी जो वैल्यू हमने लेट किया दैट इज ए नॉट. बोलो सर. वाई टी का वैल्यू आया था ए नॉट प्लस, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, A1 इंटू साइन ऑफ टी. उसके साथ कुछ था टी प्लस थीटा 1, टी प्लस थीटा 1 और साथ में फाई आएगा एक्स्ट्रा में. और यहाँ हमने ये वैल्यू लेट किया था इनपुट का A2 इंटू साइन ऑफ 2t प्लस थीटा 2 एंड प्लस फाई 2. ये तो हमने यहाँ लिखा था सर कैपिटल A नोट यहाँ आ जाएगा, कैपिटल A1 यहाँ आएगा, कैपिटल A2 यहाँ आएगा, यहाँ आपका फाई 1 आएगा और यहाँ आपका फाई 2 आएगा. और लास्ट स्लाइड में हमने सब कैलकुलेट कर लिया. तो वाई टी का वैल्यू क्या आया? रखो फटाफट से. सर ए नोट का वैल्यू 5 है तो रखो कैपिटल ए नोट का वैल्यू 5 है. ये हो गया 5 स्मॉल ए नोट प्लस कैपिटल A1 का वैल्यू क्या है सर? √10 है सर. यहाँ लिखोगे आप √10 इंटू स्मॉल A1 इंटू साइन ऑफ टी प्लस थीटा 1. और फाई का वैल्यू कितना आया था सर? फाई 1 का वैल्यू आया था माइनस का 71.56 डिग्री एंड प्लस. अब बताओ ये क्या लिखा है? ये A2 ये प्लस के पहले लिख दिया शायद मैं. यहाँ पे आपको लिखना है ये सर A1 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा आपका A2 एक्स्ट्रा में, A2 इंटू ये स्मॉल A2 है. ठीक बात है. अगर मैंने व्हाइट से लिखा है तो उसको व्हाइट से लिखते हैं कैपिटल वाले को. ये स्मॉल A2 पहले ही था और व्हाइट से आपने जो नया वाला एप्टीट्यूड आया A2. यस. तो बताइए A2 तो हमारा सर एज इट इज है. कैपिटल A2 का वैल्यू कितना था सर? 10/√40 था. वी शुड राइट 10/√40.
I think you are exactly getting the same. Yes sir. Sin of 2t plus theta 2 and phi 2 का वैल्यू आपने बोला -108.43 डिग्री. This is your yt guys, and one yt is given to us. If we will compare that, then we will directly comment on the x of t जो हमने let किया था x of t. वहां हमको small a0, small a1, small a2 चाहिए, and we also want small theta 1, theta 2. Yes or no? We want theta 1, theta 2 also. Clear? तो बताइए फटाफट से, what is the equation given to us? Yt equal to, it is given to us 1 plus sin t minus 60, 1 plus sin of t minus का 60 डिग्री, sin of t minus 60 यही है, and plus 5 sin of plus 5 sin 2t minus 45, 2t minus 45 degree. Is this the yt equation guys? अब बताओ इस yt इक्वेशन में जो हमारे साथ यहां आया, कंपेयर कर लो. वंस यू विल कंपेयर, बच्चों जरा बताओ ये 5 a नोट किससे कंपेयर होगा? तो 5 a नोट यू शुड कंपेयर विथ 1. तो यहां से a नोट का वैल्यू कितना आ गया? a नोट वैल्यू इज 1/5. a नोट का वैल्यू 1/5 आ गया. अब बताओ नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में a2 इंटू कैपिटल A2, ये कितना आ गया? सॉरी ये a1, ये वाला स्मॉल a1 इंटू कैपिटल A1 इज इक्वल टू व्हाट? सर इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ कोफिशिएंट 1 ही है सर और कुछ है ही नहीं. बोले सर तो ये √10 लिखेंगे ना, ये कंपेयर करेंगे ना सर. तो लिखोगे आप √10 इंटू A1 इक्वल टू 1. तो फ्रॉम दिस शैल वी से दैट कि स्मॉल a1 जो आया इट शुड बी 1/√10. यस सर. अब बताओ नेक्स्ट में सर ये वैल्यू कंपेयर करोगे आप इस कोफिशिएंट 5 से, देन वी शुड राइट 10 अपॉन √40 डॉट A2 is equal to what? Is equal to 5 sir. Then what should be A2? Then from here A2 value is nothing but, बोलो 5 into √40 अपॉन 10 आया क्या? yes sir, ये A2 आ गया. तो उसको सिंप्लीफाई भी कर लेना बच्चों. तो ये सब हमारा, ये देखो A0 आ गया, A1 आ गया, ये हमको चाहिए था, A0 आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया. Now we are looking for 5 and 5 2. Yes. Tell me now we have A0, A1, A2 also. Now you should compare this value also na. What is this value guys after comparison? Shall we say that कि sir theta 1 minus 70.56 degree, it should be equal to what? It should be equal to what? The overall angle should be equal to -60. Yes sir, -60 degree. So tell me what is theta 1 from here? Just calculate this and tell me. Similarly guys, we should also calculate this theta 2 minus 108.43 degree. It should be equal to what? -45 sir. -45. Then from here you can calculate the theta 2. From here you can calculate the theta 2 value. So tell me what is theta 1 and what is theta 2. Tell me fatafat what is theta 1 and theta 2. And once you will have all the values, you can write final answer now. What is the final answer? Sir, xt value what we noted, xt value what we let, xt value जो हमने assume किया था, क्या हमारा xt का value ये था क्या? a0 plus a1 into sin of t plus theta 1
plus a2 into sin of 2t plus theta 2. आपको यही एग्जामिनर पूछ रहा है. दिस इज अ 12 मार्क्स क्वेश्चन एंड आपको ये फाइनल आंसर लिखना है xt. जहां पे आपके पास ए नोट का वैल्यू आ चुका है, स्मॉल ए नोट. व्हाट इज स्मॉल ए नोट फ्रॉम लास्ट स्लाइड? स्मॉल ए नोट 1/5 था सर, 1/5. So 1/5 plus what is small a1? 1/√10. So write 1/√10 into sine of t plus what is theta 1? देखो ये प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ना. थीटा 1 का वैल्यू 11.56 बोल रहे हो, ठीक है. मैं लिख देता हूँ यार डायरेक्टली. थीटा 1 का वैल्यू आया है सर 11.56. 11.56 बोल रहे हो आप, जो बोल रहे हो वो लिख रहा हूँ मैं. और ये 63.43 डिग्री. So now student we should write this sin t, हमने just बोला अभी 11.56 degree theta 2 and plus what is a2? a2 value is what? क्या लिखे a2 को? Is it 5 to 10 कर दें सबसे पहले तो √40/2 आ रहा है क्या? √40/2 और इसको भी कैंसिल कर दें क्या? ये √10 आ रहा है क्या? 4 को अगर बाहर निकाल दें हम तो 2 बन के आ जाएगा तो √10 हो जाएगा. तो अपॉन 2 टू कैंसिल, √10 आ रहा है. √10 आ गया सर. तो √10 इंटू साइन ऑफ और ये आ जाएगा 2t और दिस इज 63 पॉइंट प्लस 63.43 डिग्री. जस्ट क्रॉस चेक दिस एंड जस्ट टेल मी आर यू गेटिंग द सेम xt और नॉट. जस्ट कंफर्म दिस. This is a 12 marks question, engineering services mains question. Are you getting same to same or not? Just confirm this. √10 sin 2t plus 63.47. Exact value you are getting or not? This is nothing but your answer, guys. This is the only your answer. This is the only your answer. Do it fast. Shall we go for next or wait? Are you getting with this, beta? Or if you want to write this already completed, or I will give you time. Tell me. These 2 slides completed. If you want time, then you can reply. So previous slide, this slide or this slide, beta? Do you want? Okay, I'm just writing here. Want number 1 slide or number 2 slide? Type in chat box. You want number 1 slide or number 2 slide? Number 1 slide first. Okay. Okay, first complete this. I am waiting. First complete this. I am waiting. Yes, Chandu, control system. Right now we are having a parallel session. So for this week, you will get all the sessions live. You can also make the notes. So once slide number 1 complete, I will show you slide number 2. I hope am I audible? Okay. Yes, take your time, guys. No problem, we are waiting.
Yes, guys. I think now you are saying next slide. Okay. So this is a slide number 2. Complete it fast. I am waiting. Yes, guys. Tell me. This is completed. Wait or next. Wait. Okay. I am waiting. I'm waiting. Take your time. Yes, I think now completed. Next, shall we go for next now? Chalo. So now, student. Okay, one more question we have based on the same concept. The transfer function GS is given to us. I think audio video clear. Examiner is asking excited by sine omega t. The steady state output of the system is 0. Student, here also you can understand. Sir, this is the complete transfer function G of S we should keep here. The input is what? Sine of omega t. And the output should be what? Output should be A into sine of omega t plus pi. But examiner what saying कि the steady state output value is 0. It means how can this output value 0 guys? Output value should only be 0 if capital A is 0. मतलब अगर capital A का value somehow 0, then it will make 0 into sine term 0 only. Yes or no? 0 into something is 0. Is it clear? And what is A? Sir, A is nothing but magnitude of the transfer function at omega. Omega input is nothing but omega here, na? Yes. Omega input is nothing but omega here. चलो बताओ यहाँ पे what is the transfer function? In this transfer function, wherever gs, I will put s equal to j omega. So what should we get? s की जगह j omega रखो तो minus omega square plus 9. We should write minus का omega square plus 9 and plus j omega plus 2 and plus का j omega plus 2 upon, here we should write j omega plus 1
j omega plus 1, j omega plus 3 and j omega plus 4. Is it clear? Yes. Now student tell me, sir, when it will give you capital A? So the magnitude of gj omega at omega input कितना है? Omega है sir. Omega input omega है. We have to find out omega input actually. We have to find out that omega which will make the output 0. Okay sir. तो यहाँ पे पहले magnitude निकाल दो फटाफट से. What is the magnitude of real part? सर अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर. सो रियल पार्ट स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 शुड एज इट इज. Yes or no? What is the magnitude of real plus imaginary? So under root of imaginary square plus real part square 4 upon. What is the magnitude of this term? It should be under root of omega square plus 1. It should be again under root of omega square plus 9 and it should be again omega square plus 16. Now student tell me ki what should be the omega value so that this entire value must be 0, because it is nothing but capital A and we have to make capital A 0 because that will only make output 0. बोलो हाँ या ना? आउटपुट को 0 करना है हमको, आउटपुट को 0 करना है. यस. तो बताओ सर, अगर यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 है, इट मीन्स ओमेगा वैल्यू अगर 3 हो जाए, ओमेगा नेवर माइनस 3 बिकॉज ओमेगा हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑलवेज पॉजिटिव. सो ओमेगा का वैल्यू क्या पॉसिबल है? 3 रेडियन पर सेकेंड. वंस यू विल पुट ओमेगा 3 हियर, 3 का होल स्क्वायर 9 और यहाँ साइन है माइनस, तो माइनस 9 प्लस 9 कैंसल, 0 होगा, 0 इंटू समथिंग कंप्लीट 0. इट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड. चेन्नई सुपर किंग. करेक्ट आंसर CSK. करेक्ट आंसर CSK गाइस. यस और नो? चलिए note down fast. I will first show you this slide and after that I will show you this slide. So first take your time and complete this. And once you will complete, already completed, then do reply, we'll go for next. So guys, try to make the notes parallelly in the class itself. Yes guys, tell me, is this completed kya? Next slide. Okay. Yes, बोलिए. Done? Chal. So now student, next slide. Next you should make a heading, frequency domain analysis of a second order system. Frequency domain analysis for a second order system, and here we will discuss the resonant peak and resonant frequency as you can see the title of this session. Okay, जैसा कि सेशन के टाइटल में लिखा है, resonant peak, resonant frequency we are going to discuss here. Okay, yes. So now student, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. एज यू ऑल नो कि जब भी फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात होगी तो फर्स्ट स्टेप वी नीड टू पुट s इक्वल टू j ओमेगा सर. So once you will put s equal to j omega here, the transfer function will be look like this. So omega n square upon wherever is s, put j omega. So you should write here what? You should write here j omega ka whole square plus
twice zeta omega n j omega plus omega n square. Now student, here once you will do j square, you should get what? You should get omega n square upon j square means minus का omega square plus twice zeta omega n j हम मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये omega plus omega n square. Yes or no? Now student, here you can take omega n square outside the bracket. So the magnitude of fj omega is what? The magnitude of fj omega, omega n square को बाहर ले लो. So omega n square already यहाँ है. Here also you can take omega n square outside. So what you will get? You will get from here 1 minus का omega square upon omega n square plus j twice zeta. This is omega n upon omega n का whole square. Don't you think 1 omega n से 1 omega n cancel हो गया? और ये omega n square से omega n square भी cancel हो गया. So finally, what we can write the magnitude equation? We are looking for the curve of this mode of fj omega. So magnitude निकालने के लिए पहले हम fj omega लिख देते हैं अच्छे से. What is the final fj omega? The final fj omega numerator will carry only 1 upon under root of, even under root तो बाद में निकालेंगे जब हम magnitude निकालेंगे. तो right now I am writing omega square upon omega n square plus j twice zeta omega upon omega n. Is this clear or not? Yeah. Twice zeta omega upon omega n. Now student, if you will closely observe, sir, ये real part है, this is imaginary part. And if you will calculate the magnitude now, mode of fj omega, so numerator is only having 1. Now we know that under root of real part square, imaginary part square. So shall we write 1 minus का, this is omega square, omega n square. So I am writing here omega upon omega n का पूरे का square, and again complete bracket whole square also. Because magnitude under root of real part, this entire real part, and this is imaginary part, real part square plus imaginary part square means twice zeta omega upon omega n का पूरे का whole square. Twice zeta omega upon omega n पूरे का whole square. Now guys, you should tell me one more thing. Magnitude of fj omega equal to 1 upon this, ये होता है सर आपका magnitude. This is your magnitude. Is it clear? Now when we will make a curve of magnitude of fj omega, different values of omega, if will vary the omega, and depending on zeta also. Don't you think, guys, in the magnitude, if I will put omega 0, then what should I get? So mode of f omega curve with respect to omega, radian per second. Now tell me, sir, in this equation, if you will put omega equal to 0 now, then omega 0, so 1 minus 0, and this is also 0. So entirely you will get 1 only, root 1 is 1, 1 upon 1, 1. It means your curve should start from 1. Your curve should start from 1. Now ये 1 से क्यों start हो रहा है? क्योंकि in this closed loop transfer function, in this standard second order system, हमने यहाँ DC gain of CLTF 1 मान के चले हैं. अभी हम K को 1 लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए अगर K का वैल्यू 1 नहीं होता, K होता, तो वहां भी यहाँ भी न्यूमरेटर में K होता है ना. उसके बाद हम बात में करेंगे. तो अभी के लिए हमने 1 माना, तो सर 1 है K का वैल्यू DC gain of CLTF. Now student, once we will make the curve, we will get a curve like this. So this shoot, or we can say that this increment just due to the different values of zeta as far as underdamped response is concerned. Okay. So now student, this is the frequency. The frequency required for the response to reach the maximum value is known as resonant frequency. ये जो frequency है omega r, which is known as resonant frequency. It is known as resonant frequency. And ये जो value है आपका, जो कि maximum है, and this value is known as MR, or MR is known as what? Resonant peak. MR is nothing but resonant peak. Guys, this is your resonant peak. Okay. Okay. One more thing, sir. The frequency at which, or we can say that the not time, the frequency required. So not time here, frequency. वो frequency जहाँ magnitude maximum हो जाए, that frequency is known as resonant frequency.
or the maximum value of the magnitude is known as resonant peak. Or the frequency at which the magnitude is equal to 0.707. It means 1 by root 2 of 1 by root 2, okay, we can write 1 by root 2 of the first value, initial value. What is the first value? First value 1. तो 1 का 1 by root 2 क्या हो गया? आप बोलोगे सर 0.707 हो गया, और आप बोल सकते हो 70.7% also, 0.707 or 70.7% also. Okay, this is also known as, guys, 3 dB frequency. So cutoff frequency pe what is the magnitude? 1 by root 2. This is the 1 by root 2 multiple of the initial. So right now, because at omega equal to 0, the curve starting at 1, so that is why 1 by root 2. If suppose that it is omega equal to 0, magnitude is k, then it should be k by root 2. Then it should be what? K by root 2. Is it clear? So this is the second order system, magnitude with respect to omega. This is the curve. So first you should make this. After that we will do a small derivation for omega r and mr. This is important for GATE and competition exam. 1 or 2 times directly GATE question has been asked, directly formula based question. So first of all you should make this guy. Okay, note down fast. I am waiting. Completed. Shall we go for next? So now student, first make a heading, resonant frequency. First make a heading, after this diagram, make a heading, resonant frequency. This slide also completed? This slide also completed kya? Completed? Yes. So now make a heading, resonant peak or resonant frequency first. Okay. So resonant frequency, this is omega r. First we should do a small derivation here. Just make a heading, resonant frequency. Now student, tell me, what is your magnitude of fj omega? Sir, magnitude equation is nothing but 1 upon under root of 1 minus omega upon omega n का whole square and इस पूरे का भी whole square and plus twice zeta omega upon omega n whole square. This is the value of magnitude, and we are looking for the frequency at which this magnitude will become maximum. मतलब सिंपल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इफ यू वांट टू मेक दिस मैग्नीट्यूड मैक्सिमम then you need to differentiate this with respect to omega and equate to 0. Don't you think we need to make df magnitude of the mode of f omega with respect to omega should be 0, and once we will do this we will get some omega, and that omega is known as omega resonant frequency.
because at this omega your mod f omega will become mr. मतलब इस ओमेगा पे, अगर इस ओमेगा पे आप यहां पुट कर दोगे ओमेगा की जगह ओमेगा आर, then this magnitude will become mr. mr मतलब maximum value of magnitude. Clear? So to calculate this, we should differentiate. Yes, sir. So while to make our differentiation easy, what I am, omega n is a constant value here. So what we are assuming omega upon omega n, I am assuming as a u. Okay, you can assume as a u here. So if I will assume u, then I can write my equation now. Now I can write my equation, mode of f लिख रहे हैं short में. What you can write, mode of 1 upon under root of, is it 1 minus u whole square, अच्छा u का square parallelly whole square plus twice zeta u का पूरे का whole square. Is it this equation, guys? Now student, tell me, we need to differentiate this and make it 0. ये पूरा टर्म थोड़ा यहाँ लिख देते हैं इधर, तो हमने लेट किया ना यहाँ लिख देते हैं, सर हमने जो लेट किया वो यहाँ सर्कल में लिख देते हैं अलग से. तो ओमेगा बाई ओमेगा एन को हमने u लेट किया. तो नाउ स्टूडेंट चलिए राइट हियर, सर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ओमेगा है ये, इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं. तो डिफरेंशिएट करने से पहले आई एम जस्ट शिफ्टिंग दिस एंटायर पार्ट इन द न्यूमरेटर, सो इट शुड गिव मी 1 माइनस का u स्क्वायर एंड प्लस वी शुड राइट हियर ट्वाइस जीटा u, should write here twice zeta u का स्क्वायर, yes or no, ब्रैकेट क्लोज. और यहाँ पे इस पूरे की पावर क्या है बच्चों, इस पूरे की पावर वी शुड राइट माइनस हाफ क्या, yes or no, माइनस हाफ. yes. Now student, tell me, once you will differentiate this d mod of upon omega और u, yes sir, mu with respect to u we are doing, so with respect to we are writing. तो यहाँ डिफरेंशिएट करोगे सबसे पहले, व्हाट इज द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, पावर शुड कम फर्स्ट. तो इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी माइनस का हाफ बाहर आएगा, एंड इट शुड बी 1 माइनस का u स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हियर वी शुड राइट व्हाट गाइस, ट्वाइस जीटा u का होल स्क्वायर एज इट इज, एंड पावर में क्या आ गया, इज इट माइनस का 3/2. सिंपल डिफरेंशिएशन बोलो यस और नो, रिप्लाई करते रहे साथ साथ. इज इट क्लियर और नॉट? नाउ टेल मी कि सर अभी तो आपने पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, नाउ वी शुड डिफरेंशिएट दिस टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. सो हियर डॉट ओनली एंड आई एम राइटिंग हियर, so don't have space there, so I am writing here, it is in multiple only. So now इसकी पावर 2 आगे आएगा, yes sir, 2 into 1 minus u square. Now tell me what is the differentiation of 1, 0, and what is the differentiation of minus u square, is it minus का 2u. Now tell me what is next, plus, what is next plus, plus you should write here 4 zeta square, और u square का मतलब हो गया यार 2u, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0. इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. Now tell me बच्चों finally, once you will open the bracket, what you will get, 2 here, 2 here, so 2 to the 4, is it minus का 4u, minus का 4u and minus minus here plus, ये 2 to the 4, 4 और u का whole cube and plus 4 to the 8 zeta square u equal to 0. Is this crystal clear बच्चों? Yes sir. So now can we take outside something? Yes sir. Can we take minus का 4u outside? बोलो. Yes sir, minus का 4u outside ले लो आप. Then shall we write here कि अंदर क्या बचा, 1 minus here is u square plus 4 to the 8 2 zeta square equal to 0 बचा क्या? Yes sir. Now u can't be 0 because if u 0 then omega 0, and at omega equal to 0 the curve value is 1. We are looking for the omega r, which is of course not 0. Omega r should be greater than 0. Is it clear or not? It means this term must be 0. तो ये टर्म 0 मतलब क्या, 1 minus u square plus 2 zeta square equal to 0. Is it clear? Yes sir. So from this equation can we write u square equal to what? Can we write u square equal to उधर लेके जाओ, बोलो भाई. Okay. So once you will, okay, this is also minus sign actually sir, this is also, because जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो दिस इज ऑल्सो माइनस ना. अरे भाई, why you are not replying? This is also minus ना, बोलो जोर से आया ना, because minus sign already took outside, minus also took outside, that is why this one positive है.
That is why this one positive. That is why this one positive, तो मतलब यहाँ भी माइनस है ना फिर तो माइनस. So u square equal to what? So we'll get u square equal to 1 minus 2 zeta square, 1 minus 2 zeta square. We should write 1 minus 2 zeta square. So now what is u value? What is u value? U value is nothing but root of 1 minus 2 zeta square. I hope this is crystal clear. And do you know what we let? We let u is nothing but omega by omega n. So student, tell me, in place of u, if I will put omega by omega n, then I should get a root of 1 minus 2 zeta square and just cross multiply omega n. So you will get omega equal to omega n root of 1 minus 2 zeta square. Is this crystal clear? And this omega is nothing but omega r. This omega is nothing but what, guys? Omega r, resonant frequency. This omega r is nothing but what? Resonant frequency. So important formula as far as any competition exam is concerned, we need to remember the formula. You can also recall the formula omega d. Damn natural frequency क्या आया था? Omega n root of 1 minus zeta square, omega d. This is omega r. Is it clear? Just do it first. I think we should start from here. So do it first. Why we have noted here omega r? Because of the resonant term, we have replaced this omega as a omega r. Is it clear or not? We can write omega equal to this. Omega is omega r. Why omega r? Because at this frequency or mode of f will become maximum. इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा मोड ऑफ एफ मैक्सिमम होगा, इसीलिए हमने इस फ्रीक्वेंसी को आर से रिप्रेजेंट किया है. एंड हियर आर इज रिमाइंडिंग रेजोनेंट टर्म. ओके, resonant frequency. Is it clear? Will I show you this slide, beta? Do reply first. Is this completed? Which slide you want? Tell me. Do you want this slide? Yes, sir. This slide. Completed? This slide only? Shall we go for next or wait? Wait, okay. Yes, guys, take your time. Once you will complete, you should done. चलो आगे चलते हैं. Next slide. Should I write this slide now?
This is also done. Very nice. So now you should write, guys, resonant peak. Resonant frequency आ गया? Yes, sir. Now we will do a small derivation for resonant peak. Okay. Resonant peak की बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, इधर ही. You have a space here, no? What is the resonant peak? The resonant peak is nothing but magnitude of fj omega mod of omega at omega equal to omega r is nothing but mr, and which is nothing but resonant peak. Which is nothing but resonant peak. Then we have this value. This value is nothing but what? So can we write, sir, mr is nothing but actually 1 upon under root of 1 minus, even we have this value also omega by omega n का whole square, और इस पूरे का भी whole square था क्या? Yes sir. And twice zeta omega upon omega n का whole square. Yes, yes. Now tell me, guys, in place of omega, if I will put omega r, then I will get this mr. Yes or no? So while writing omega r, even can I write this value also? So this is omega upon, so this is omega r upon omega n. So can I write this is ur? So in place of omega r by omega n, can we put root of 1 minus 2 zeta square? ये जहां भी omega r upon omega n, ये देखो ना, omega r upon omega n, omega r upon omega n, can we put root of 1 minus 2 zeta square? Yes sir. So if I will put this now, then I should get 1 upon root of now tell me, root of 1 minus 2 zeta square in place of this bracket only. So don't you think this bracket, this square will get cancelled with this square root? So what we should get? We should get 1 minus, again bracket 1 minus ka 2 zeta square, and plus here we should have 2 ka whole square 4 zeta square, and then omega by omega n ka whole square. It means again is pure ka whole square. So don't you think we should write 1 minus ka 2 zeta square? Is it clear? Now student, just simplify it, so you will get mr equal to what? 1 upon under root of, tell me, 1 get cancelled. So tell me, here square also there na? Yes sir, square also. Once you will make it square, you will get 2 ka whole square 4 zeta 4 plus ka 4 zeta square minus ka 4 to ja 8 zeta 4. Just do reply fast beta, hai na? Is it clear or not? Now simplify it and tell me 1 upon what? Sir, 4 zeta 4 minus 8 zeta 4 will become minus ka 4 zeta 4. Minus sign dominating. So you should get under root of 4 zeta square and minus ka 4 zeta 4. Are you guys getting the same? Tell me yes or no. And from this equation only, if I will take common 4 outside, root से बाहर लोगे 4 को, root 4 is nothing but 2 और zeta square को भी बाहर ले लो. तो जब बाहर लेंगे तो exactly ये आएगा क्या? चेक कर लो एक बार. mr equal to twice zeta हमने बाहर ले लिया. तो यहाँ से 4 का रूट बाहर होके 2 आ गया, zeta square zeta हो गया, तो यहाँ 1 बचा. Is it a root of 1 minus zeta square? And this is nothing but the resonant peak formula. Is it clear? So resonant peak formula is nothing but mr equal to 1 upon twice zeta root of 1 minus zeta square. Now we have one important condition. Resonant peak has only significance or only valid if there is any resonant frequency possible. It means mr can only possible if wr possible. Yes or no? अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगा तो रेजोनेंट पीक कैसे होगा? सो रेजोनेंट पीक हैज ओनली सिग्निफिकेंस इफ वी हैव ए प्रॉपर वैलिड ओमेगा आर, और ओमेगा आर को वैलिड करने के लिए ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑलवेज पॉजिटिव. यस, ओमेगा आर का फॉर्मूला क्या है? सर,
MR can only possible if omega r possible. So to make omega r valid, what is omega r formula? Omega r formula is omega n root of 1 minus twice zeta square. This is the omega r formula. Yes or no? Now tell me, to make omega r valid, omega r must be positive. It should not be in the imaginary. It should not be negative. तो बताओ, अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए, इमेजनरी नहीं हो सकता, इट मींस दिस टर्म शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. बिकॉज इस अंडर रूट में अगर नेगेटिव आ गया, देन रूट माइनस वन तो जे दे देगा ना आपको. यस और नो? आर यू गेटिंग दिस? We are not assuming, we are find out. We are having the reason for the same. Why we are assuming zeta less than 1? Assume करने की जरूरत नहीं है. ये अगर आप नहीं करोगे तो वो वैलिड नहीं आएगा ओमेगा. Is it clear? पॉजिटिव होना चाहिए. So to make omega r valid, your inside the term should be positive. So 1 minus 2 zeta square should be positive, मतलब greater than 0. It means 1 is greater than twice zeta square. It means zeta square must be less than half. And from this you will get zeta is less than, and from this you will get zeta is less than 1 by root. क्या बोलते हो बच्चे? सुनो. And once the zeta is less than 1 by root 2 na, then only your MR will be greater than 1. Why greater than 1? Because ये start ही 1 से हुआ था. It is started from 1 only at omega equal to 0. So of course, अगर MR का value greater than 1 है, then only it will have the significance कि वो peak value है. वरना फिर peak कैसा? क्योंकि 1 से तो start ही हुआ था. तो peak value at least should be greater than 1. Yes or no? And now, in this formula, this is the important condition from where we got this. So this is the condition to generate this. ये क्वेश्चन एग्जामिनर वाइवा में पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है. जनरली स्टूडेंट बस फटाफट से बोल देते हैं कि जीटा का वैल्यू 1 by root 2 होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? Why omega value less than 1 by root 2? ये, this is the reason. Omega value less than 1 by root 2 because to make omega r valid, and once omega r valid, then only there is a scope of MR. और in this formula once we will put zeta equal to 1 by root 2, exactly जब zeta 1 by root 2 हो जाएगा, बताओ आप. अब यहीं पे देख लो आप, अगर exactly zeta को 1 by root 2 कर दोगे ना, तो 1 by 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 minus 1 omega r 0 हो जाएगा. And once omega r 0, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो गया ना फिर. तो zeta equal to 1 by root 2 पे your MR value is equal to the 1, जो कि इनिशियल पॉइंट था. And one more point we should write कि सर अगर जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 by root 2 हो जाए तो, इफ जीटा वैल्यू ग्रेटर देन 1 by root 2 रखोगे ना यार, ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा. और रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म विल जनरेट जे टर्म इमेजिनरी, दैट विल मेक ओमेगा आर इनवैलिड, दैट विल मेक योर ओमेगा आर इनवैलिड. और अगर ओमेगा आर ही इनवैलिड है, ओमेगा आर ही नॉट पॉसिबल है, देन एम आर नॉट पॉसिबल. So when zeta is greater than 1 by root 2 na, then there will be no MR, then there will be no resonant peak, guys. There will be no resonant peak. So you can make this box. Then there will be no resonant peak. Resonant peak, guys. Now you should take your time. I think I should show last slide also. ये slide show करना है? Previous slide, yes sir. So now this slide I think. So first complete this slide and after that just let me know so that I will go for next slide.
Yes. Quant mechanism saying that, sir, what happen if zeta is greater than 0? I think now you are getting the question. It does, because there is no, yes, correct. Tell me guys, is this clear or not? Zeta must be greater than 0, otherwise it will be not underdamped. This is only valid for the underdamping. Zeta 0 हो जाए तो undamped हो जाएगा ना बेटा, yes or no? So maximum resonant peak, whatever we are discussing now, maximum resonant peak or even the maximum peak overshoot, if you want to relate with the time domain, then maximum peak overshoot, these all are valid for the underdamping. Underdamped मतलब zeta is greater than 0. Is it clear? Yes, so zeta of course greater than 0, positive only. बोलो ना बच्चों, आगे चलेंगे हम. Shall we go for next or wait? Because if you will make zeta 0, then MR formula is what? Something upon 0 infinity. So MR infinity चला जाएगा, yes or no? That will also invalid. तो चलिए बात करते हैं next slide. Shall we go for next slide now? MR is clear. Now here is one more thing guys, where examiner can confuse you. कहाँ पे examiner आपको confuse कर सकता है कि सर यहाँ पे in the starting of derivation, do you know we have considered this value. And k को हमने 1 लिया था. Here k is the DC gain of closed loop transfer function. This is the standard second order system closed loop transfer function. So DC gain of closed loop transfer function k था, and we have provided that कि k का value 1 है. तब हमको ये पूरा डायग्राम मिला और ये पूरा डेरिवेशन करने के बाद हमको ये फाइनल कर्व 1 से स्टार्ट हुआ. अगर मैं इसको वापस से बोलूं कि अगर k का वैल्यू 1 नहीं होता, k होता, तो डोंट यू थिंक फिर हर बार यहाँ k आता, यहाँ भी k आता, यहाँ भी k आता, yes or no? तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे फिर मैग्नीट्यूड 1 नहीं k होता. ओमेगा इक्वल टू 0 पे फिर मैग्नीट्यूड 1 नहीं k होता. तो मैं यहाँ लिख रहा हूं और k. अगर k का वैल्यू इन जनरल 1 होगा, तो जब आप बुक्स में देखोगे, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक में, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब उन्होंने ये लेट किया, एज्यूम किया कि डीसी गेन ऑफ CLTF, डीसी गेन ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 1 है. बट गेट एग्जामिनर बहुत सी बार k का वैल्यू 1 के अलावा कुछ दे देगा, 5 दे देगा, 10 दे देगा, 2 दे देगा. तो उस समय अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट जस्ट फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, अगर आपने उस समय केवल ये फॉर्मूला याद किया, ट्वाइस जीटा 1 माइनस जीटा स्क्वायर, then this formula is wrong in that case. This formula will give you resonant peak only and only if it is provided that k equal to 1. It means DC gain of closed loop transfer function is 1. But क्यों मिस्टेक होने का चांस है? क्योंकि स्टूडेंट इसी फॉर्मूले को याद रखेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में यही फॉर्मूला लिखा रहता है. तो स्टूडेंट जस्ट डाई हार्ट द फॉर्मूला को लिख लेगा, बस वो याद कर लेगा फॉर्मूला. इज इट क्लियर बेटा? और यहीं पे गलती हो जाएगा. अगर मान लो एग्जामिनर ने k का वैल्यू कुछ और दे दिया, 5 दे दिया, k का वैल्यू 5 दे दिया, और k का वैल्यू 5 कैसे दिया? एग्जामिनर ने दे दिया कि मैग्नीट्यूड ओमेगा इक्वल टू 0 पे 5 है, ओमेगा इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड 5 है. तो फिर एमआर का फॉर्मूला क्या हुआ पता है? एमआर का फॉर्मूला फिर ये हुआ 5 अपॉन ट्वाइस जीटा रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. इट मींस इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू मेक इट जनरलाइज्ड, then we can also write here, yeah. तो क्या मैं यहाँ k लिख दूं क्या? So this is your in general formula of resonant peak. This is your in general formula for the resonant peak. However, this k value, where k is what? Where k is DC gain of closed loop transfer function. DC gain of closed loop transfer function. CLTF बोल दो आप, आसान लैंग्वेज, इन शॉर्ट लैंग्वेज. सो k इक्वल टू डीसी गेन ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. इन जनरल हम k का वैल्यू 1 मान के चलते हैं. अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं दिया है, अगर कुछ गिवन ही नहीं है, देन बाय डिफॉल्ट वी शुड टेक 1 वैल्यू ओनली. इज इट क्लियर? सो दैट इज वाई जनरल फॉर्मूला जो स्टूडेंट को याद रहता है वो ये, बट आपको याद रखना है ये. नाउ टेल मी वन मोर थिंग, आई एम आस्किंग टू यू,
Tell me guys, if DC gain of CLTF is K, not equal to 1, it is K, then tell me, do you think that कि it affect omega r? क्या K का वैल्यू ओमेगा आर को अफेक्ट करेगा क्या? अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड K है, तो टेल मी इट इज अफेक्टिंग योर ओमेगा आर और नॉट? विल इट अफेक्ट ओमेगा आर? टेल मी, विल इट अफेक्ट ओमेगा आर? क्या वो ओमेगा आर को अफेक्ट करेगा? कुछ लोग यूट्यूब पे रिप्लाई कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, शाबाश, आप लोग रिप्लाई करते रहिए, पैदल चल रहा है स्ट्रीमिंग, फटाफट से बताइए। रिप्लाई ना, मैं ऑडिबल ना भाई, ऑडियो क्लियर है ना? बताओ फटाफट, क्या पूछ रहा हूं मैं? If I will take initial value or DC gain of closed loop transfer function is K, not 1, then tell me, will it affect my omega r? MR को तो अफेक्ट करेगा, वो हमने देख लिया, बट क्या वो ओमेगा आर को अफेक्ट करेगा क्या? ये K वैल्यू मैग्नीट्यूड में तो आ गया यहां, अगर ये वैल्यू 1 ना हो के K होता, तो क्या ओमेगा आर को अफेक्ट करता क्या? ये पूछ रहा हूं मैं, सिंपल क्वेश्चन। विल इट अफेक्ट माई ओमेगा आर गाइज? अरे इतना लैग तोड़ना होता है यार, व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग? यस सर, यस मिथुन, करेगा? चलो, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग नहीं, कम सम स्टूडेंट्स आर सेइंग यस सर, ओके ओके, सो यूट्यूब आल्सो यू शुड रिप्लाई। नाउ स्टूडेंट, you should tell me कि sir, while the process of omega r calculation, what we did in the omega r? Come on India, tell me omega r where sir? Omega r here omega r. In the calculation of omega r, do you know what we did? Suppose करो omega r calculate कर रहे हैं, यहाँ पे k है, here is k, okay sir. Now tell me beta, if I will, here what will come? K will come. Here what is? K by 2 will come, okay sir. Okay sir, okay, no problem at all. Now tell me what? Tell me what finally? Sir, it is already minus 3 by 2, so power of minus 3 by 2 already equal to 0. So this term only equal to 0. Hello, yes or no? It means here you should multiply minus ka 4k only. That's it. So don't you think it is only, anyway it is constant term equate to 0. So there is no effect of mu. There is no effect on u. And if there is no effect on u, there is no effect on omega r. Omega r will not affect at all. I already shown you here in this derivation. So इसका मतलब u value does not affect, it means omega r does not affect. It means omega r remains same. It means omega r remains same. I hope it is clear guys. So let me make a conclusion here. Let me make a conclusion. Resonant peak formula is what? That you should remember for the competition exam. Resonant peak formula is nothing but k upon twice zeta root of 1 minus zeta square, and where k is DC gain of closed loop transfer function. If nothing is given about k and all, then we should consider k value 1 in general. K value 1 in general. In general, generally k value क्या होता है? 1 होता है. But similarly, if I talk about omega r resonant peak, this resonant frequency omega r is nothing but omega n root of 1 minus twice zeta square. Is this crystal clear, प्यारे बच्चों? Omega r equal to omega n root of 1 minus 2 zeta square. Is it clear or not? Is this crystal clear? Is this crystal clear? Yes or no? Yes, sir, clear. Chale. So now we should write cutoff frequency. What is the cutoff frequency? Frequency at which the magnitude has a value of 1 by root 2 multiple of k I am writing. What is k? Where k is the magnitude at magnitude of mod of fj omega at omega equal to 0. बोलो हाँ या ना? अच्छा, अगेन बिकॉज इन जनरल k का वैल्यू 1 है, तो 1 by root 2.
It means initially I told you na, if this is my curve, then the frequency at which my magnitude will be the 1 by root 2 multiple of 1. Because initial value 1 था, इसलिए 1 by root 2 multiple of 1. अगर initial value k होता तो 1 by root 2 multiple of k. Is it clear or not? Which is also known as in the form of communication 3 dB cutoff frequency. 3 dB cutoff frequency. 3 dB frequency or cutoff frequency. So cutoff frequency pe magnitude should be equal to this. That's all. Now tell me, student, how we can calculate this? How we can calculate this? Come on, tell me. What is your magnitude? So if you want to do that derivation, you can do this. Sir, it is nothing but 1 upon under root of 1 minus, here student, shall we write here omega upon omega n ka whole square and plus twice zeta omega upon omega n ka whole square. यही इक्वेशन थोड़ी देर पहले हमको मिला था 4-5 स्लाइड पहले, यही इक्वेशन था. और इसी इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन ओनली, इफ आई विल रिप्लेस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी, अगर जहां भी ओमेगा है, ये रहा ओमेगा, ये रहा ओमेगा, अगर ओमेगा को ओमेगा सी कर दिया जाए, देन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जे ओमेगा इट शुड बी 1 by root 2. यस और नो? बिकॉज इन जनरल हम एम आर को क्या माने, के का वैल्यू 1 माने. इन जनरल के वैल्यू इज व्हाट 1. तो अगर आप 1 by root 2 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, और आफ्टर दैट वंस यू विल डू 4-5 स्टेप, देन यू विल गेट ओमेगा सी वैल्यू. दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट यू शुड गेट. However, as far as GATE exam is concerned, till now no question directly has been asked on this frequency value, but still for the IIT ISC interview purpose, you should remember this expression. How we'll get this expression? By putting this magnitude equate to 1 by root 2, after that cross multiply. How to remember for long time? Sir, omega r formula anyway you know. Omega r is what? Omega n root of 1 minus 2 zeta square, anyway you know na. You know this formula na. This is resonant frequency na. So cutoff frequency में प्लस करोगे अंडर रूट ऑफ 442 कोफिशिएंट याद रखिए, एंड जीटा 4 माइनस जीटा स्क्वायर एंड जीटा की पावर 0. So it means 4 zeta 4 minus 4 zeta square plus 2, that you can remember for the competition examination point of view. However, for GATE or any competition exam, directly question इस पे फॉर्मूले पे नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा गया है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 1 by root 2 और k by root 2, अगर k का वैल्यू अदर देन 1 है तो. इज इट क्लियर? And as far as low pass filter is concerned, guys, this distance is also known as bandwidth from 0 to omega c. This distance is also known as bandwidth. So as far as second order low pass filter is concerned, this expression is also known as bandwidth. Okay, bandwidth. And we know one relation also, bandwidth and time relation. We know that bandwidth is always reciprocal to time. So rise time is always reciprocal to bandwidth. If we want wider bandwidth, then TR must be decreases. So if TR decreases na, then your bandwidth going to be increases. And once your TR decreases, it means time decrease हो रहा है. It means it will make your system faster. Yes or no? Faster as. Similarly, guys, if I talk about कि rise time increase हो रहा है, it means system must be slow or sluggish, and it will make your bandwidth decrease. Bandwidth decrease. So this relation anyway you know. If you don't know, you should write the relation also. So bandwidth is also representing is nothing but omega c only, because the difference between 0 to omega c is nothing but the bandwidth. Is it clear? Make it fast. So I think you are in this slide now. I think you are in this slide. Yes. Make this slide. Complete this slide, beta. Once you will complete, just let me know so that we'll go for next.
Yes guys, tell me. Completed kya? Shall we go for next or wait? Done? Done guys. All of you replying done? Yes, no. So again a beautiful question guys. DDB frequency, the first order low pass filter, DC gain is 1. So student, now two things are given in this question. First thing is DC gain is 1. Out of the 4 options, you need to choose where DC gain is 1. How to find DC gain? To calculate the DC gain, you can directly put omega equal to 0, but we need to ignore pole and 0 at origin. I told you in the chapter number 1 initially. So if the first statement unity DC gain, it means after putting omega equal to 0, in which option you are getting 1 magnitude. तो बताओ इधर यहाँ पे ओमेगा 0 पुट करेंगे तो 1/1000 आएगा, बट वी आर लुकिंग फॉर यूनिटी डीसी गेन. इट मींस ऑप्शन नंबर ए फॉर श्योर रॉन्ग है. So in such type of question, how to solve option elimination is the only method. You need to choose one and one option one by one, and after that you need to satisfy the condition. So here unity DC gain, by using this fact, once I will put omega equal to 0, so 1/1 तो ये तो 1 ही रहा. So it means 1 मतलब unity gain आ रहा है. It means B can be correct. B can be correct. Here also once you will put omega 0 ना, तो ये 2000 cancel हो गया. So this can also correct, क्योंकि ये भी तो 1 आ गया सर. और यहाँ पे वापस omega equal to 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब this is also wrong. This is also wrong guys. Because it will not give you unity DC gain. ये आपको unity DC gain नहीं दे रहा है, ये आपको 0 दे रहा है. Yes or no? Now बताओ, अब ऑप्शन नंबर बी और सी है, दोनों ही यूनिटी डीसी गेन दे रहे हैं, बट वी हैव टू आल्सो सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू 3 dB कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब यहां बोल रहा है एग्जामिनर कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 2000 पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड वी ऑल नो दैट कि एट दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बोलो, is it k by root 2, but k तो 1 है, DC gain तो 1 है, यूनिटी है, तो it should be magnitude is equal to 1 by root 2. तो इसका मतलब ये है कि सर इन दोनों में से अगर मैं मैग्नीट्यूड का इक्वेशन लिख दूं, so once you will write the magnitude equation here, you should write under root of 1 plus 1000 omega का whole square. It means under root of real part square, imaginary part square. Or here is also you should write 2000 pi upon under root of 2000 pi whole square plus omega square. Is this clear? Now tell me guys, in both the frequency, in both the magnitude, you need to equate 1 by root 2. आपको ये चेक करना है कि अगर मैं 1 by root 2 के इक्वल करता हूं, ये दोनों 1 by root 2 आना चाहिए क्या? अगर मैं ओमेगा का वैल्यू ये पुट कर दूं, इफ आई विल पुट ओमेगा वैल्यू, जहां कहीं भी ओमेगा मतलब ये ओमेगा और एक ये ओमेगा, if you will put omega value 2000 pi here, then tell me which transfer function is equal to 1 by root 2. बताओ जरा फटाफट. इन दोनों में से जो भी ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा सी 2000 pi पुट करने पे 1 by root 2 बन जाएगा, that option is only correct. Because the magnitude should be equate to 1 by root 2. So now you need to check. Once you will put omega value 2000 pi here, it should not be 1 by root 2, sir. But here once you will put, numerator is already having 2000 pi. Here also in place of omega, once you will put omega c 2000 pi, don't you think you will get 2000 pi ka whole square and plus again 2000 pi ka whole square, and you can take easily this common. और जैसे ही आपने कॉमन लिया, क्योंकि स्क्वायर है, रूट हटेगा तो बाहर आएगा 2000 pi. That 2000 pi and this 2000 pi get cancelled, and you will get inside the bracket 1 plus 1 only, and which is exactly equal to 1 by root 2. It means correct answer is Chennai Super King, option number C for Chennai. Is this crystal clear or not guys? Do reply. Clear sir, absolutely clear. Just make it fast. Do it fast. Just make it fast guys, do it fast.
Is it clear? Yes, guys, tell me, shall we go for done? Done. I think replied only done, sir. Shabash, very good. Okay. So this is the question, guys. Again, you should tell me how to solve. A unity feedback control system has the forward path. Is it your OLTF? अगर पूरा system closed loop transfer function है, where it is saying that unity feedback system means is plus minus unity feedback, and this GS value is nothing but this, that is K upon S into S plus 2. और HS तो 1 है, HS is 1 only. The peak resonant, अब देखो क्या लिखा है, the peak resonant magnitude MR of the closed loop frequency response is 2 and the corresponding value of the gain K is, आपको K पूछा है. अच्छा मेरे को बताओ कि यहाँ पे K क्या है. देखो ये यही तो कंफ्यूजन मैं पूछता हूँ, बताओ what is K here? Is it DC gain of CLTF? ये K क्या DC gain of CLTF है क्या? ये K क्या है बताओ जरा. What is this K? अच्छा बताओ कि यहाँ MR का फॉर्मूला क्या लगेगा. MR फॉर्मूला इज व्हाट हियर? MR फॉर्मूला इज 1 अपॉन ट्वाइस जीटा रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर और K अपॉन, टेल मी. I will show you guys. Once you will write the closed loop transfer function here because of unity feedback, so don't you think the closed loop transfer function is n upon d plus n? So it should be K upon S square plus 2S plus K. So don't you think the CLTF is nothing but K upon S square plus 2S plus K? And now tell me what is DC gain? DC gain means once you will put S equal to 0, K by K 1 है. It means DC gain of CLTF K, यहाँ पे K जो है वो तो ओमेगा n स्क्वायर है. यहाँ पे K को कंपेयर करोगे तो ओमेगा n स्क्वायर है ना. स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम. Are you getting or not? Are you getting or not? So what is the DC gain of CLTF here? Sir, once you will put S equal to 0, K by K get cancelled. So you can write here the DC gain of closed loop transfer function. The DC gain of closed loop transfer function is 1 here. The DC gain of closed loop transfer function is 1 here. That is why this is the only formula we need to apply. That is why this is the only formula we need to apply. Tell me hi or no. Are you with me? Then do reply in chat box. I think here is also lag, I think. So I think that is why you are replying late. Tell me, is it clear? Clear, then just reply. Yes, sir. Shabash. So now we are looking for the gain. Yeah, we are looking for the gain K, and the frequency response is 2. It means MR का जो value है, MR का जो 2 दिया है. What is the value given to you? MR value is 2. So MR formula 1 upon twice zeta root of 1 minus zeta square. This value should be 2. Don't you think you will get 1 upon, बोलो ना, twice zeta root of 1 minus zeta square. So from here, if somehow you will calculate squaring both sides and all, you can find out the zeta value. Yes or no? Yes, sir. And we have one more condition, sir. If you will compare this characteristics equation now, then we will get twice zeta omega n equal to 2. And we will also get what? K equal to omega n square. We also get omega n square equal to K. We will also get omega n equal to root K. So what is omega n root K? What is zeta? Zeta value सर यहाँ से आ जाएगा. तो यहाँ से can we say that 2 get cancelled? So zeta omega n equal to 1. So once you will have zeta, can you calculate omega n? So omega n equal to 1 by zeta. And once you will have this, don't you think K equal to
k इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, यस। तो हमको k निकालना है तो पहले आपको जीटा निकालना होगा, एंड जीटा लिटिल बिट सम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड हियर. You need to square both sides, you will get the quadratic equation. After that, two values of zeta you will get, I think. One value is, I think, near to 0.2 something, 0.23 something or what, and one value I think 0.09 something or 0.9 something. So don't you think that this value is invalid? Because to make MR valid, zeta value must be less than 1 by root 2. Zeta का value तो less than 0.707 होना चाहिए ना. Then you will get 2 zeta value from this calculation. So only this value is valid. 0.22 or 23 something, you can calculate it. And once you will get this now, so final value जो आएगा k का range, the k range must be, it should be equal to between 13 to 18. यहाँ पे जो range था गेट क्वेश्चन में, थोड़ा सा रेंज बड़ा रेंज था, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर कोई स्टूडेंट 0.23 पूरा लेगा, 0.22 लेगा, तो इस तरह से वो वैल्यू क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो इट शुड बी बिटवीन 13 to 18, मतलब आंसर आपका आएगा 14 पॉइंट समथिंग और 15 पॉइंट समथिंग. इज इट क्लियर? अगर 14 पॉइंट समथिंग आ रहा तो भी करेक्ट है, 15 पॉइंट समथिंग आ रहा तो भी करेक्ट है, क्योंकि रेंज यहाँ थोड़ा सा बड़ा था. चलो, तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास गाइस. आज की क्लास के लिए इतना ही. पहले आप बता दो ये कंप्लीट कर लिया क्या आपने? ये कर लो पहले आराम से, टेक योर टाइम. फर्स्ट यू शुड कंप्लीट दिस. First, you should complete this, yes. Follow. Is this completed? So calculation part you can do later also, yes, because it takes time actually. Okay guys, so that's all from today's class. Done everybody? Okay guys, so bye bye प्यारे बच्चों, take care. Tomorrow also we will meet in the YouTube live class as well as parallelly live streaming going on for this week. So we will meet tomorrow also at 7 p.m. and we will discuss about the gain margin, phase margin, parameter omega PC, omega GC. We will discuss some problems also based on this resonant PA, resonant frequency. After that, we will start that. Okay. सर इतना सब कोर्स याद कैसे रखना होता है, भूल जाता हूँ. अजेंद्र सिंह, that is why revision matters बेटा. That is why revision makes a revision plays very important role here. Okay, because we know that right now you are able to understand, you are getting this also, but exam is not tomorrow na. So you whatever we are learning right now, you need to manage to remember till the date of GATE exam, and that is the most difficult thing. Very few students are able to manage to remember all the concept till the date of GATE exam, because very few students are able to revise it on a consistent basis. तो ये जो बोल रहे हैं ना मैं भूल जाता हूँ, ये हर आदमी भूलता है. Every human being will forget it for sure if they will not practice it, if they will not revise it. Yes or no? आप कोई भी फील्ड में हो कि कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको कोई चीज को कंसिस्टेंट करते रहोगे, देन ओनली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, और तभी वो चीजें आपको याद रहती है. इज इट क्लियर बेटा? So that is why practice and revision makes you perfect. Yes, practice makes you perfect and revision. जितना आप रिवाइज करोगे उतनी चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती है. That is why in my classroom I always insist my student to make their beautiful classroom notes, because before the 1 month of GATE exam, before the 2 month of the GATE exam, your notes will sufficient to recall all the concept. By just turning the pages, आपको केवल पेज टर्न करने हैं एग्जाम से 1 महीने पहले, लेकिन वो पेज के अंदर कुछ होना भी चाहिए. खाली पेज टर्न नहीं कर सकते ना, नोट्स के पेज टर्न करने. So you should create the note. This is the time to create the notes. This is the time to make the notes. Once you will have 500 pages classroom notes of each and every subject. अगर आपके पास कंट्रोल सिस्टम का 500 पेज का नोट्स है,
तो वो नोट्स आपके लिए एसेट है, उस नोट्स के अंदर सब कुछ है, उस नोट्स के अंदर गेट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम्पल है, सब कुछ तो है। तो नो नीड टू रेफर सो मेनी थिंग, बिकॉज गेट के 1 महीने पहले बहुत सी चीजें नहीं देखनी होती। आपको इस तरह से अपने कंटेंट को डिजाइन करना है। At your study table, at least you should have 10 to 12 notebook of each and every subject, separate notebook, and then revise it, do practice, revision of PYQs also, and in the last phase, you should do mock test also. Test series also plays important role last में. तो टेस्ट सीरीज का काम लास्ट में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, और साथ में रिवीजन करते चलो। इज इट क्लियर बेटा? एक सही तरीके का रिवीजन, यस 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 हिसाब से रिवीजन भी हम आपको करवाएंगे बच्चों, जब लास्ट में पेज में आएगा हम रिवीजन सेशन भी करेंगे डेडिकेटेडली। ओके, चलो, लव यू गाइस, बाय बाय।